A very good morning, all of you. My dear student, we had discussed in the previous lecture about types of developer and test station. Now, I'm going to discuss about the disadvantages of the test station. That is, the defect must be open to the surface. Non-porous surface can be inspected only. Pre-cleaning and post-cleaning is required, and the proper chemical handling is its disposal is required. Now the types of penetrants. What types of penetrants are used? There are the following types of penetrants which is used in the penetrant testing techniques. The first one is the penetrant materials are basically categorized in two headings: type 1 and type 2. Type 1 is fluorescent penetrants and type 2 is the visual penetrants. And second one is on the basis of the method of the removal of penetrants from the parts. The method A is the water washable, method B is the post emulsifiable, and method C is the solvent removal, and method D is the post emulsifiable. And the next is the hydrophilic method, right? This method's property is excessive penetrance removal. It only provides limited solvent action. A water spray pre-NS may remove the excessive penetrant when part is immersed in tank 20 seconds to 5 minutes, leaving only for a फाइन फिल्म ऑफ एनिटेशन. इसमें क्या होता है कि हम जो सॉल्वेंट होता है उस पर स्प्रे करते हैं. कोटिंग करने के बाद उसको हम जो है इमर्ज कर देते हैं सॉल्वेंट में और 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक छोड़ देते हैं फॉर फाइन फिल्म ऑफ एनिटेशन. द नेक्स्ट वन इज द वाटर वॉशेबल. तो what is this? In this method, spray washing is done with water at temperature of 50 to 100 degree Fahrenheit and a black light to determine the removal of the penetrants. एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हमको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो 50 से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की ज़रूरत होती है और ब्लैक लाइट की ज़रूरत होती है जो कि पेनिट्रेट के जो रिमूवल होता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंट रिमूवल मेथड यूज्ड व्हेन वी यूज ऑफ वाटर एज पेनिट्रेंट रिमूव इन द इनइफेक्टिव. वाटर का यूज करते हैं सॉल्वेंट रिमूवल में, ठीक है. एंड द फोर्थ वन इज द पार्ट ड्राइंग. दिस इन्वॉल्व्स द ड्राइंग part with hot air dryer at temperature below 160 degree Fahrenheit. Over dryer is avoided as over drying can reduce the effectiveness of the inspection. Actually इतना 160 डिग्री Fahrenheit तक ही हम करते हैं. अदरवाइज ओवर ड्राइंग करेंगे तो क्या करता है वो इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्पेक्शन को क्या करता है अवॉइड कर देता है. द नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ द डेवलपर्स. व्हाट आर द एप्लीकेशन used in penetrant testing? The first one is a dry powder, aqueous or non-aqueous, ठीक है. नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन. आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर अ 10-minute dwell time for developer is required and then part is placed in the dark area while inspection for gyrofluorescent penetrant test. Magnaflux ZB 100 F Fahrenheit black light is used. So these are the penetrant types techniques which is used in the penetrant test techniques under the non-destructive testing. Now the next topic is gyrofluorescent penetrant testing. It is a very important topic which is related to the non-destructive testing techniques, right? It is very useful and useful for the finding the defects, right? So what is the gyrofluorescent penetrant test? It is a simple, reliable, economical testing method which can be used for inspecting defects like seams, forging laps, porosity, cold surts, fatigue cracks, grinding cracks, etc. in a variety of porous and non-porous material like aluminum, magnesium, brass, copper, bronze, stainless steel, plastic, ceramics and फेरस एंड मटेरियल्स. एक्चुअली ये जो हमारा टेक्निक होता है ये रिलायबल भी है, इकोनॉमिकल भी है और जिसका हम यूज करते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए किसके कास्टिंग के जो डिफेक्ट्स होते हैं लाइक सीम्स हो गए, फोर्जिंग हो गए, फटीग को चेक करने के लिए और बहुत अलग अलग पोरस और नॉन पोरस मटेरियल दोनों के लिए लाइक एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ब्रास, कॉपर, ब्रोंज, ये सबके दोनों चीज़ों के लिए मतलब पोरस और नॉन पोरस दोनों मटेरियल को का जो हम लोग डिफेक्ट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ gyrofluorescent penetrant testing, right? But here consists of following steps. It is consist of following steps such as first one is the part preparation.
It is very important that the defects are open and must be cleaned properly before application of penetrant. The part must not only be free of contamination but anything which can clog surface defects like rust, grease, oil, wax, paint, scale, etc. For this cleaner like caustic and acid are used to remove paints and plastic cast coating. Aqueous cleaners are used to remove the oil. बेसिकली द पार्ट प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि हम जिस पार्ट का हमको चेक करना रहता है पेनिट्रेशन, उसको हम क्या करते हैं डिफेक्टर चेक करना रहता है, उसको हम क्लीन कर लेते हैं और उसके ऊपर जो भी रस्ट या फिर डस्ट या ग्रीस या ऑयल जो वैक्स जो भी लगा रहता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्लीन कर लेते हैं, जिसको हम प्री क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, अगला है द एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेंट। तो आफ्टर क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स, पहले क्या किया, पार्ट प्रिपरेशन में ही हमने इस पार्ट्स को क्लीन कर दिया, जिस प्रोडक्ट को हमको डिफेक्ट चेक करना रहता है पहले ही हम उसको क्लीन कर लिए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पेंट एंड डिफरेंट ग्रीस रस्ट जो भी मटेरियल लगे रहते हैं उस पर रस्ट लगे रहते हैं उसको हमने पहले ही क्लीन कर दिया। फिर आफ्टर cleaning of paint, gel of penetrant is applied by spraying or immersing. After application, a waiting time is required for the penetrant action to take place. This waiting time is called a dwell time, and it depends on the material being inspected and the type of defects. Actually, अब हमने क्लीनिंग कर लिया तो प्रोडक्ट रेडी है फॉर डिफेक्टिंग, तो उसमें हम करते क्या कि जाइलो पेनिट्रेंट जो है इस आपको अप्लाई करते हैं, मतलब उसमें क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे या फिर इमर्ज कर देंगे, और इमर्ज करने के बाद कुछ समय तक वेट करते हैं। रिक्वायर्ड होता है, उस समय का रिक्वायरमेंट होता है कि हमको पेनिट्रेशन जो है टेक्स प्लेस रिक्वायर्ड, तो वो जो टाइम होता है वेटिंग टाइम उसी को हम ड्वेल टाइम कहते हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल बीइंग इंस्पेक्टेड एंड द टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, जो डिपेंड करता है उस मटेरियल की जिसको मतलब हमको इंस्पेक्ट करना और टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेंट। द नेक्स्ट स्टेप, रिमूवल ऑफ पेनिट्रेंट। जाइलो जो फर्स्टली इन्वॉल्व्स 4 मेथड फॉर रिमूविंग पेनिट्रेंट। जाइलो जो है पहले जो है 4 प्रकार से जो है यूज किया जाता है रिमूव करने के लिए पेनिट्रेशन। द फर्स्ट इज द लिपोफिलिक मेथड या द पोस्ट इमल्सिफायर। इन दिस मेथड इमल्सिफायर आर usually applied on part by dipping it in the tank followed by draining for 2 to 5 minutes, then it is washed off with water। पहले क्या होता है कि हम जो इसमें क्या होता है लिपोफिलिक मेथड में क्या होता है, हम जो है जो भी मटेरियल यूज करते हैं उसको अप्लाइड करते हैं और फिर उसको डिप कर देते हैं, फिर उसको निकालने के बाद क्या करते हैं, वॉश करते हैं। ठीक है, तो वो ये जो चीज़ें होती है हमारी, यही हमारा क्या है, हमारा जो है जाइलो फ्लोरोसेंट है। And then magnetic particles, we have already discussed about the magnetic particles, what is the use of magnetic particle, what is the principle of magnetic particles. So we had already discussed about the magnetic particle and magnetic inspection, and also discussed about the scope of the magnetic particle testing. तो ये these are topics, ये सब टॉपिक मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है, ज़रूरी है, जो कि इंपॉर्टेंट है ये, और डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक ये ऑलरेडी वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। एक्चुअली one or 2 week ago I had post this video, right? So indirect magnetism and DC magnetism we already discussed in the previous lecture. Now testing techniques. So testing techniques, what is testing techniques? The testing techniques is very important. Testing technique in magnetic particle testing, various methodology and inspection are used, in which some them are the mentioned below. The first one is the dry particle, then the first one is the dry particle, and the second one is the wet suspension, and the next is a wet suspension inspection and the steps involved in the wet suspension. What is the dry particle inspection? In this method, dry magnetic particles of the variable colors, may be red, black, gray, are used to achieve a high level of contrast between the particles and the parts to be inspected. तो एक्चुअली कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा ड्राई पार्टिकल्स होता है उसमें क्या है कि उसमें बेसिकली जो यूज होंगे वो अलग अलग कलर होंगे, रेड कलर का हो सकता है या फिर आपका ये रेड कलर हो सकता है और ब्लैक कलर हो सकता है, ग्रे कलर हो सकता है, इस कई कलर का हो सकता है।
एंड दिस इंस्पेक्शन वेल सूटेड फॉर द रफ सर्फेस। बेसिकली ये जो इंस्पेक्शन होता है ये हमारा रफ सर्फेस के लिए होता है एंड इट इन्वॉल्व द वेरियस फॉलोइंग स्टेप्स। देन फर्स्ट स्टेप इज सर्फेस प्रिपरेशन and second one is the magnetization, and the third one is the application of particles, and fourth one is the removal of excess power, and the fifth one is the removal of the magnetizing force. What is magnetizing force? This is applied when electromagnetic are used as a source of magnetization. If bar magnet are used this, then they can be left in a place. And the next is the visual inspection of the indication. So these are the 6 points which is comes under the dry particles inspection, and these points are using to find out the defects with the help of the dry particles inspection. These 6 points are very important very important. And the next is the wet suspension inspection. What is it? In this method magnetic particles are used in suspension with water or oil. This method is more sensitivity than a dry particle method. It uses both visible particles, that is ferromagnetic iron oxide in black or brown color, and fluorescent particles which are coated with pigments that fluoresce when exposed to ultraviolet light. मतलब कहने का मतलब क्या है कि वेट सस्पेंशन में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं उसको यूज़ करने के लिए हम वाटर और ऑयल का यूज़ करते हैं, और इस मेथड जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, और इसका जो यूज़ करते हैं वो विजिबल पार्टिकल्स के लिए होता है, जैसे फेरोमैग्नेटिक वगैरह के लिए होते हैं, और हमको अल्ट्रावायलेट का भी यूज करते हैं. सम स्टेप्स इन्वॉल्व इन द वेट सस्पेंशन इंस्पेक्शन. द फर्स्ट वन इज प्रिपेयर द पार्ट सरफेस. सबसे पहले हम पार्ट को प्रिपेयर करते हैं, मतलब हम उसको क्लीनिंग करते हैं और क्लीन डस्ट को, जो डस्ट रहता है उसको क्लीन करते हैं, उसको हटाते हैं. द सेकंड वन इज द अप्लाई द सस्पेंशन. मतलब पहले तो हमने इसको क्लीन कर दिया प्रोडक्ट को जिसको हमको इंस्पेक्ट करना है. दूसरा हमने क्या कर लिया कि अप्लाई करना है सस्पेंशन को, अप्लाई कर दिया. देन क्या है, देन अप्लाई द मैग्नेटाइजिंग फोर्स. देन हम क्या कर देंगे, सस्पेंशन अप्लाई करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, मैग्नेटाइजिंग करेंगे फोर्स को. एंड देन लास्ट में क्या होगा, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द इंडिकेशन. फिर क्या होगा, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द इंडिकेशन आ जाएगा. तो ये हमारा होता है वेट सस्पेंशन इंस्पेक्शन, और इसमें क्या होता है कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट इन द मैग्नेटिक रबर इंस्पेक्शन. व्हाट इज मैग्नेटिक रबर इंस्पेक्शन? This method uses in uncured liquid rubber containing suspended magnetic particles. Then a magnetic field is applied to it which sets the rubber into the region of the component which is to be inspected. This technique is similar to the production of casted material. So this is the magnetic rubber inspection. And next one is the residual continuous magnetization techniques. What is the residual and continuous magnetizing techniques? The first one is the residual magnetization techniques. What is it? What is this? In this technique, component to be inspected is magnetized first. In this technique, component to be inspected is magnetized first. Then before application of magnetic particles, magnetizing force is stopped. Thus this indication is produced by magnetic particles attracted due to the residual field of magnetized component. Again I repeated. In this technique, इस टेक्निक में क्या होता है, द कंपोनेंट टू बी इंस्पेक्टेड, जिस कंपोनेंट को हमको इंस्पेक्ट करना होता है वो पहले उसको मैग्नेटाइज करते हैं. देन उसके बाद जो है क्या करते हैं, एप्लीकेशन को हम जो है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स को मैग्नेटाइज फोर्स इज स्टॉप्ड, उसको हम स्टॉप कर देते हैं. फिर हम इंडिकेशन को फिर हमारा प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक पार्टिकल अट्रैक्ट ड्यू टू द रेजिडुअल पल्ड. ठीक है. अगेन नेक्स्ट वन इज द कॉन्टिन्यूस मैग्नेटाइजेशन टेक्निक. इन दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन ग्रेट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी इज रिक्वायर्ड. In this technique, component to be inspected is magnetized and magnetization is surface of a component. Thus magnetic flux is produced when the force more particles to vibrate and slides down towards the cracked surface. The only limitation with this method is that it produces leak heat which may be damage the first component when direct magnetization is used. So this is the continuous magnetization of techniques, right? And some advantages of NMPT, magnetic particle testing. It is very
quick and simple test process, highly sensitive to be detection of surfaces and slightly subsurface linear indication, can inspect parts with irregular surface and accept easily. Pre-cleaning of component is not as critical as it is for some other inspection method, can detect both surface and near subsurface defects, less expensive than other method of the quickly assurance. Means what are the advantages of the MPT? That it is very quick and simple test, power, प्रोसेस हाईली सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होता है और इंस्पेक्ट करता है पार्ट को, इरेगुलर सर्फेसिस को, और क्लीन करते हैं। पहले प्रोडक्ट को चेक करने से पहले उसको क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद डिटेक्ट करते हैं, और फिर लेस एक्सपेंसिव भी होता है। बट एवरी टेस्ट टेक्निक्स हैविंग सम लिमिटेशन, तो दी हेयर द शेयर आर सम लिमिटेशन ऑफ MPT। फर्स्ट वन, इट रिक्वायर्स केयरफुल एंड प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ टेस्ट सर्फेस। जिस सर्फेस को हमको टेस्ट करना है उसका प्रॉपर क्लीनिंग करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से वो सफाई करनी पड़ेगी ताकि हम डिफेक्ट्स को फाइंड आउट कर सकें। ये हमारा पहला लिमिटेशन। दूसरा है, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑस्टेनेटिक आयरन कास्टिंग। ठीक है, इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन फ्लॉज एंड करंट फ्लोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी एक लिमिटेशन है, परपेंडिकुलर होना चाहिए जो। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑपरेटर डेवलपमेंट टेस्टिंग टेक्निक्स। एक ऑपरेटर जो हमारा होगा उसको डिपेंडेंट होना चाहिए टेस्टिंग टेक्निक के लिए। इंस्पेक्शन ऑफ लार्ज पार्ट्स में रिक्वायर यूज ऑफ इक्विपमेंट विद द स्पीड पावर रिक्वायरमेंट। एंड द नेक्स्ट लास्ट इज द डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ टेस्ट कंपोनेंट इज नेसेसरी। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो है कुछ टॉपिक जो बचे हुए थे हमारा नंबर सेकंड में, उसको हमने ख़त्म किया है। और भी कोई टॉपिक अगर बचा रहता है तो यू हैव टू इन्फॉर्म मी, देन आई विल अपलोड द वीडियोज़ ऑफ रिलेटेड टू दैट टॉपिक। If anybody have any doubt, my dear student, don't hesitate, ask me anytime, any question through the WhatsApp or mail or comment below this video link. So hope so तुम आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। वीडियो आपके पास मैंने नोट्स भेज चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी सेंड द नोट्स ऑफ ऑल द यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ। तो NDT जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, एज़ पर एक्टिव सिलेबस मैंने सारे नोट्स भेज चुके हैं आपको और वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है। तो सो यू हैव नोट्स एंड यू हैव वीडियो ऑल्सो, तो फॉलो द वीडियो विद the help of the notes. You should understand better. So thanks for the watching this video, and you have any problem, you have any doubt, feel free to ask me. Okay.